Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I hope you all are doing well. You know, the agenda of today's class is to study esterification in detail. Esters is a class of organic compound that have the functional group in which carbon double bond oxygen, and then there is another oxygen with a single bond carbon on the other side of carbon, and on both sides of this oxygen we have carbon atoms, right? Both sides we have carbon atom. This functional group is called ester linkage. This is called ester linkage. How do esters are made? Listen closely, everyone. Whenever you react any alcohol with a carboxylic acid, any carboxylic acid, we get ester, and water is produced as well as a byproduct. So in esterification, ester is made when carboxylic acid react with alcohol. You can use dilute sulfuric acid as as a catalyst to catalyze the reaction. Nothing more. I mean, iska aur koi role nahi hai, dilute sulfuric acid. Imagine we are using methanol and we are reacting it with methanoic acid, which is a carboxylic acid. जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, पहले तो अल्कोहल इज अ जनरल टर्म, कोई भी हो सकता है, methanol, ethanol, propanol. Alcohol is a family. Similarly, carboxylic acid is a general term. I use specifically methanoic acid reacting with methanol. Now the ester made must be a specific ester. अब ऐसा तो हम ester general तो नहीं कह सकते ना. There has to be a specific name of that ester, right? अब first of all we should know how to predict the name of very esters. तो आई थिंक मैंने कल आपको बताया था कि जो भी अल्कोहल यूज करेंगे दैट वुड बिकम, क्या बनेगा वो? दैट वुड बिकम आयल. सो वी हैव मीथाइल. सिंस वी आर यूजिंग मेथनॉल, सो इट वुड बिकम मीथाइल. जो एस्टर बनेगा उसका नाम स्टार्ट होगा मीथाइल, एंड वट एवर द कार्बोक्सिलिक एसिड इज आर वी यूजिंग, इट विल बिकम OH. So since we are using methanoate, so the other part of ester would be methyl methanoate. ये तो हमने नाम प्रिडिक्ट कर दिया. जो एस्टर बनेगा वो क्या होगा? इट शुड बी methyl methanoate. क्यों methyl है? क्योंकि मेथनॉल यूज कर रहे हैं. और क्यों methanoate है? Because we are using methanoic acid. Correct? Right? Okay. I want everyone to predict the name when we are reacting ethanol with propanoic acid. Ethanol with propanoic acid. Everyone, less than 20 seconds. Ethanol with propanoic acid. Done? लिख लिया सबने? सो क्या है नाम, कौन बताएगा? स्टार्टिंग विद हाइफा. Sir, it's ethyl propanoate. Excellent. So जो भी अल्कोहल है वो आयल बन जाएगा, तो इट शुड बी ethyl, एंड जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 8 बन जाएगा, तो इसका नाम होगा ethyl propanoate. So the very basic and simple logic is alcohol will become aryl and carboxylic acid will become OH. And we know that the byproduct is water, which is also made in this reaction. So water is the other byproduct, right? Ethyl propanoate plus water. One last example and then we'll work on the actual structures of ester, that how to draw the. अब ये तो हमने पता चल गया कि जो अल्कोहल यूज करेंगे वो आयल बनेगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे that will become OH. But how to draw the structures? So imagine this time I'm using butanol and I'm reacting it with ethanoic acid. 20 seconds. Butanol with ethanoic acid. Everyone.
Esterification is a process, is a method, is a chemical reaction in which alcohols reacts with carboxylic acid to form ester. This process is called esterification. अभी हम इनके uses भी पढ़ेंगे. Done. तो कौन बताएगा इसका नाम? What should be the name when this very alcohol reacts with? Abdullah. What's the name of ester when made when butanol react with ethanoic acid? Yes, Abdullah. It has to be butyl, क्योंकि butanol है तो क्या होगा? Butyl and ethanoate. Correct? यही लिखा सबने? So carboxylic acid would always become OH and water is made in this process as well. Okay. Now, let's write the actual molecule ethanoic acid. It must have 2 carbons, and since it is ethanoic acid, it should have this functional group, right? Ethanoic acid, it should have carboxylic acid, right? This is ethanoic acid, and we are reacting it with butanol, which means it must have 4 carbons. And मैंने specify नहीं किया, चले मैं butane 1 ऑल कर लेता हूँ, तो मैं इसके साथ OH लगा देता हूँ, ठीक है? बाकी सबके 4 पूरे करेंगे, इसके साथ 2 आएंगे, इसके साथ भी 2 hydrogens, इसके साथ 3 hydrogens. How to correctly draw the structure of that very ester made in this reaction, which would be butyl ethanoate. सब लोग और से देखेंगे. I mentioned earlier in the last class, so whenever alcohols react with carboxylic acid, O hydrogen of alcohol is reacted with OH of carboxylic acid to produce water molecule, and whatever is left will be combined. मैं यहाँ से start करूँ, ठीक है? It has to be H3C, C double bond O, and now that bond is empty because OH has been removed. This carbon is bonded to oxygen of alcohol. This is oxygen of alcohol. Oxygen का hydrogen निकल गया, and that very oxygen have 4 carbons further connected. वो कैसे हैं? CH2, 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 and C. यही लिखा हुआ. So this is how you can draw the structure of ester. Please इसको check करें सब लोग. Done. A confirmed 3 to 5 mark question from esterification without guess. Confirmed question. Both inshallah in MCQ and in theory. And let me tell you, most of the students, they struggle to understand the esterification and they struggle to respond to the question from esters. अगर आपको नेमिंग आती है, आपको एस्टर दे दिया, फॉर एग्जांपल वो आपको एस्टर दे देगा, ब्यूटाइल एथेनोएट, प्रिडिक्ट द रिएक्टेंट्स दैट आर यूज्ड टू फॉर्म दिस वेरी एस्टर. तो कैसे रिएक्टेंट प्रिडिक्ट करोगे? कैसे करेंगे सर? जो आयल है वो तो अल्कोहल से आया, तो सर ये तो ब्यूटानॉल, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ब्यूटेनॉल, और ये क्योंकि O8 है तो हमें चाहिए एथेनोइक एसिड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आया, तो वी नीड एथर. इससे आसान चीज कोई हो नहीं सकती. So you were supposed to draw to predict the product from the reactant and reactant from the product. So either ways would work, and we should be able to draw and predict the structure in both ways. ये सबको समझ आ गई how to draw the structure of ester, how to predict the name, and then how to draw the structure of ester. Okay, let's try one more. I want you to react propanol with ethanoic acid. First, predict the name of ester and a small molecule with colorless molecule water. इसका नाम predict करो. फिर propanol और ethanoic acid का structure draw करो, और जो ester बनेगा वो draw करो. शाबाश सब लोग. Propanol और ethanoic acid का structure draw करो and predict the structure of ester in less than 2 minutes. Everyone. सबकी स्टेरिफिकेशन आज स्ट्रांग होनी चाहिए व्हेन यू लीव द क्लास. अभी हम पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस करते हैं, you'll get to know.
डन। Okay, let's draw the structure of propanol, everyone. This is how you should draw propanol. और इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ भी 4 पूरे करने होते हैं ना हर किसी के, इसके साथ 3 आएंगे। तो मैं एग्जैक्टली हाइड्रोजन लिख देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको समझ आ रही है सबको। एथेनोइक एसिड वुड हैव 2 कार्बन एंड सिंस इट इज ओइक एसिड, तो जिस मर्जी के साथ एंड वाले कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, तो मैं इसके साथ लगा देता हूँ। चलो इजी कर देता हूँ आपके लिए, हम इसके साथ लगा देते, ड्रॉ करना इजी हो जाएगा क्योंकि पास पास है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, ऐसे ही किया सबने। तो ये तो मेरे पास दोनों स्ट्रक्चर्स आ गए। अब वी नो दैट व्हेनेवर कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with alcohol, OH of carboxylic acid and hydrogen of alcohol, they react and they leave, right? क्या होगा ये, they will leave, और जो भी रह गया उसको आपने कंबाइन करना है, कनेक्ट करना है। कैसे करना है सामने देखें सब लोग। So I'll start from this carbon, CH3, then CH2, then another CH2 and then oxygen। यहां तक तो वो मैंने अल्कोहल को सिर्फ हाइड्रोजन उसका उड़ाया, बाकी सब कुछ ऐसे लिख लिया एज इट इज एग्जैक्ट। Now this oxygen is bonded to this carbon, oxygen is bonded to the carbon which has double bond oxygen, and the same carbon is bonded to CH3. Correct? Makes sense, everyone? What is the name of this ester? What is the name of this ester? Water is also made in this process. Name of this ester. थोड़ो रिएक्टेंट को आपको डायरेक्ट एस्टर दिया हुआ है, पहले जो हम इसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं नाम। प्रोपेनॉल है तो ये क्या होगा, इट शुड बी प्रोपाइल, एंड क्योंकि एथेनोइक एसिड है तो इट शुड बी एथेनोएट। एथेनोएट मेक सेंस एवरीवन? प्रोपाइल एथेनोएट। सबको समझ आ गई भाई? यस। हाउ टू प्रिडिक्ट द एस्टर फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, how to draw the structure of ester when given with the molecule, and then when you are given with ester, how to do the reverse engineering, how to predict the reactant। for example, अगर आपको given हो कि propyl ethanoate बनाना है, predict the reactant, तो आपको पता हो भाई propyl आया है propanol से और ethanoate आया है ethanoic acid से। ऐसे ही किया सबने? make sense everyone? yes, thank you. Okay, one last category in which examiner can test your understanding and knowledge about the esters is examiner would give you any random ester. For example, let's say methyl ethanoate, तो आपको एस्टर दिया हुआ है, तो आपसे कहेगा draw the formula, displayed formula of methyl ethanoate. How should you draw the structure when given with the name? Important चीज सब लोग सामने देखेंगे। Okay, so since we draw the structure of ester, आपने ऑक्सीजन ड्रॉ करना है। एस्टर में जो सेंटर में चीज होती है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन को सबसे पहले हमने आयल वाली साइड अटैच करनी है, वो राइट पे कर दो लेफ्ट पे कर दो डजंट मैटर। अब राइट आयल वाली चीज के साथ क्या लिखा हुआ है, मिथाइल। मिथाइल का मतलब है 1 कार्बन, तो मैं इसके एक साइड पे 1 कार्बन लगा देता हूं। अब आपने जो O8 वाली साइड है वो ऑक्सीजन के दूसरी साइड पे लगानी है, तो O8 वाली साइड पे कितने कार्बन है, एथ 2 कार्बन। इस तरफ मैंने 2 कार्बन लगा दिए। जो O8 वाली साइड होती है उसका पहला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। मिथाइल वाला कार्बन हैज सिंपल हाइड्रोजन एटम्स, राइट, एंड जो O8 वाला कार्बन है, आई मीन वी हैव एथेनोएट 2 कार्बन, तो उसमें जो पहला कार्बन होगा जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट अटैच होगा वो ऑक्सीजन वाला होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन।
अब इसके हाइड्रोजन्स पूरे कर दो और दिस इज methyl ethanoate. Please look at this molecule. Right? एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं, इसको चेक करें सब लोग. This time we have to draw propyl methanoate. Propyl methanoate. Okay, let's draw oxygen. प्रोपाइल है तो एक तरफ 3 कार्बन लगाओ और उनके हाइड्रोजन अटैच कर दो. आयल में तो सिंपल हाइड्रोजन आएंगे. और मेथेनोएट है तो इसके अदर साइड पे एक कार्बन आएगा और वो कार्बन क्योंकि डायरेक्ट है उसी के साथ ऑक्सीजन होगा और बाकी उसके हाइड्रोजन पूरे कर दो. सो दिस इज व्हाट वी कैन से प्रोपाइल मेथेनोएट. सो ये जो साइड होती है सिंपल कार्बन हाइड्रोजन वाली ये आयल होती है और जो कार्बन डबल बॉन्ड वाली साइड होती है वो O8 को रिप्रेजेंट करती है. दिस इज 3 कार्बन है तो ये मीथाइल है और क्योंकि एक कार्बन है तो ये मेथेनोएट. करेक्ट. ये अदर वे अराउंड भी हो सकता है, मतलब इट इज एज सिमिलर. अगर आप यूं लिख लो और इधर 3 हाइड्रोजन कार्बन लगा दो तो ये बिल्कुल वही है जो हमने ये इधर ड्रॉ किया. दिस इज 100% सेम. इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो. राइट. दिस इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल, 100% सेम. सो ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे कार्बन है. जिस साइड पे कार्बन डबल बॉन्ड वाला है वो O8 है तो ये एक कार्बन है तो ये मेथेनोएट है. और जिस साइड पे कार्बन हाइड्रोजन वाले हैं वो आयल है. 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइल है. सो प्रोपाइल मेथेनोएट. मेक सेंस एवरीवन? एक और ट्राई करते हैं, थर्ड वन, फिर हम लास्ट कैटेगरीज की देखेंगे. आई वांट एवरीवन टू ट्राई ड्रॉ methyl butanoate. methyl butanoate ड्रॉ करेंगे सब लोग प्लीज. methyl butanoate. Last 1 minute. डन. देखो भाई हमने ड्रॉ कर लिया ऑक्सीजन. इसके किसी भी साइड पे कार्बन लगा दूंगा. इस साइड पे लगा देता हूं एक कार्बन क्योंकि मीथाइल है. इसके चारों हाइड्रोजन आई मीन इसके 4 बॉन्ड पूरे कर दिए. अब मुझे ब्यूट ड्रॉ करना है. ब्यूट तो 4 कार्बन आएंगे और जो पहला कार्बन होता है उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है. बाकी सबके 4 पूरे कर दो. करेक्ट. सबको समझ आ गई? यस. दैट्स हाउ यू ड्रॉ methyl butanoate. अच्छा, इसकी लास्ट ये आ सकती है कि आपको वो स्ट्रक्चर दे दे और कहे इसका नाम बताओ. अभी तो नाम दिया और अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए ना. सो लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रक्चर एंड आई वांट यू टू प्रिडिक्ट द नेम. प्रिडिक्ट द नेम ऑफ दिस एस्टर. एवरीवन. हाइड्रोजन मैं पूरे कर रहा हूं सबके. रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर. दिस इज लेवल 3 ऑफ एस्टरिफिकेशन, द फाइनल लेवल. जिसको ये समझ आ गया उसका मतलब उसको सारा एस्टर आता है. Can you predict the name of this very ester? The final round in esterification. How many of you know the name of this very ester? तो आपसे सबसे पहले पूछ सकता है draw a ring around this around the ester linkage. This is ester linkage. हमें पता है ester linkage क्या है. या आपसे वो इसका स्ट्रक्चर देगा, आपसे कहेगा predict the name. So please tell me the name. Anyone in the class? What is the name of this very ester? या इसका नाम ही कोई नहीं है. This ester is without name. खुदा का खौफ कर लो यार, कुछ बता दो. What is the name?
Look at the oxygen in the middle. This oxygen has 2 carbons on directly connected. You always start from the side where the carbon has hydrogens. I mean, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन है ना, ये बाद में ये O8 वाली साइड है. So इस साइड पे कितने कार्बन हैं? 2. तो सर ये होगा इथाइल. और फिर आप दूसरी साइड पे देखोगे टोटल कितने कार्बन है सर? 3. तो ये होगा प्रोपेनोएट. तो दिस इज ethyl propanoate. Correct? Done. One last example from ester and then we'll do the uses. Predict the name of this ester. Hurry up. Level 3 of esterification. What is the name of this ester if this is an ester? Target this oxygen in the middle. Step 1, both sides there are carbon. Prefer the side where the carbon have hydrogens. So this is the side where the carbon have hydrogen. This is the side with the carbon oxygen. Prefer the side where the carbon have hydrogen. How many carbon on that side? Sir, 2. So it should be ethyl. Then look on the other side where the carbon have oxygen. Sir, how many carbon? 1. So methanoate. Make sense, everyone? Yes. Let's write the uses of esters. Ester is used. कभी किसी ने देखा एस्टर या खाया एस्टर या आपने यूज किया एस्टर? Anyone in the class? मैं हिंट देता हूं आपको. On regular basis we use ester. We apply it on our skin. We even eat esters. हम एस्टर्स खाते भी हैं, अपनी स्किन पे भी अप्लाई करते हैं. तो कहाँ यूज होते होंगे फिर एस्टर्स? What are the uses? It is used in. Sir, is it perfumes? Excellent. It is used in perfumes. Esters are sweet in taste. तो कहाँ पे यूज करते हैं इनको हम? As an artificial sweetener. ये जितनी भी हम कैंडीज खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, जो फ्लेवरिंग होती है ना, जो फूड फ्लेवरिंग होती है, ऑफ कोर्स वो एग्जैक्ट तो नेक्टर तो नहीं होता ना हर जगह. सो फूड फ्लेवरिंग में इट इज ऑल एस्टर्स. परफ्यूम में इट इज ऑल एस्टर. अगर आप अभी अपनी परफ्यूम की बोतल उठाएं ना, तो जो एस्टर्स अगर आपको हर जगह वो ऑयल या O8 मिलेगा. There will be tons of esters which will be mixed. Methyl propanoate, ethyl butanoate, because they smell good. They are used in perfumes. They are used as a क्या था? As a art of क्या था? Food flavoring, artificial sweetener, as a solvent. Right? Perfumes में use करते हैं, artificial sweetener भी होता है, use करते हैं, or as a solvent भी use करते हैं. Correct? So today's agenda was to discuss the esters in detail, and I hope I was able to explain this in the understandable way, and I hope आपने कोई इसकी कोई sense develop भी हुई है. The basic requirement is alcohol with carboxylic acid, ester with water, and how to predict the name of ester. From the name, how to draw the ester. From the structure, how to draw the name. How to predict the name. And then what are the applications? That is the end of today's class. Inshallah, the second half is about polymers. But before we start polymers, tomorrow's class is fully dedicated to past papers for whatever we've studied in this entire, organic chemistry. Next week is for polymers. और फिर हमारा inshallah ये सारा section हो जाएगा complete. Take care, everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.